And today's topic, which what we are starting with, is typography. So, why typography is crucial? Because in the past, it has been observed, like last 4 5 years, uh, continuously in the UCEED examination, it has been asked, right? So this is where, and the question minimum 2 to 3 questions are coming every year. It may be in the different segments, like it can be the part of MCQ or MSQ. It is mostly not asked in the quantitative part because such questions are not possible in that section. Otherwise, it's mostly asked in the MCQ part and the MSQ part. So we will start with the questions only so that you have a glimpse what is exactly required, what type of things these questions or these examinations are expecting from you. तो आगे बढ़ते हुए, let us start with this question. You guys can see my screen, no? Yes, sir. Okay. Okay, perfect. Great. So, this is the question from the UCEED examination. I have forgotten the year, but mostly between 2018 to 2020 के बीच में ये क्वेश्चन आया था. So, give it a try. अंकित, मुस्कान, try मारो. क्या ऑप्शन हो सकता है? And I will always recommend you that the right way of attempting a question in a UCEED examination or NID is not choosing the correct, but better eliminate the wrong one. So, Muskan, what do you think? Which one is the right option? Sir, I'm not able to understand the question. Okay. So basically, there's a word given in front of you, which is the basic style, how it is written, right? And on the basis of this words, 4 letters are given, which comes from the same font family. Font, you understand? The Yes, sir. lettering we do na. So how we writing style. So it is a Hindi word written prasiddh. So how the va V मतलब VA वाला जो pronunciation है, how it will be written in the same font. So you have to observe how a particular font ends. यहाँ पे दिख रहा है प्रा के नीचे डंडी कैसी है, नीचे वाले parts को कैसे join किया गया है, and basically the flow, how the ink has been, put on the paper. That is something which you have to capture. Sir, So I think C is the answer. why? क्यों ऐसा क्यों लगता है? Sir, because like it looks same. बाकी ये नहीं लगते, बाकी नहीं लगते. देखो सर बाकी कम लग रहे हैं. एक बहुत बड़ा डिफरेंस तो अगर देखो ना, यहाँ पे जो ये इंक है ना जिसका फ्लो दिखाया गया है, इट इज वेरी स्मूथ. एंड इफ यू सी द ऑप्शंस लाइक सी एंड डी, इट इज क्वाइट स्टैगर्ड, यानी कि थोड़ा सा इंक का ऐसे लग रहा है जैसे ब्लीडिंग हो रही हो. इंक ब्लीड कर जाता है ना जब हम न्यूज़पेपर पे लिखते हैं, वैसे. तो कॉर्नर्स को अगर ध्यान से देखो तो देखो ब्लीडिंग है, जबकि ये बहुत क्लीन आता है. इफ यू सी लिटिल बिट ऑफ हेजीनेस एट द एजेस. So in that context, this type of questions are asked, and you think C is the right option, right? Ankit, what do you think? सर जो वाइट एरिया है वो बी में और सी में ज्यादा सिमिलर लग रहा है. प्लस सी में जो वो सी में जो वाइट एरिया है उससे काफी सिमिलर है. तो फॉन्ट आइडेंटिफाई हो सकता है इस तरीके से. So you also think C? यस सर, ठीक है. Okay. थोड़ी सी चीजों को जो ध्यान देना चाहिए ना, वो तुम लोग को यहाँ देना चाहिए, इन कॉर्नर्स पे, जहाँ पे ये बैंड है. देखो, एक चीज ध्यान से देखो, बी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिकॉज बी पे बिल्कुल शार्प ये दे रखा है, बेंड दे रखा है. हल्का सा भी ये कर्व नहीं दिख रहा, जो कि अपना ए सी और डी में दिख रहा है. तो बी एक ऑप्शन नहीं बनता है, ठीक है. देन लुक एट दिस स्टाइल.
यहाँ देखो सा के नीचे जो एंडिंग है ना, ये वाली सा के नीचे, सा इज अ वर्ड, द सेम हैज टू बी कॉपीड इन आर ऑप्शन। तो फिर से ध्यान से देखो किसमें सा के जैसी परफेक्ट एंडिंग है। बिकॉज देखो यहाँ पे देखो सी में इट्स अ स्मॉल ऐसे कर्वेचर थोड़ा सा दब जा रहा है, डी में ऐसा। डी में दिख रही है। और यस सर। बट ये भी देखो यहाँ पे वा जो है, इसके इसका जो एजेस है, इट शुड बी मोर स्मूथ। ये देखो प्रा में मिल रहा है, क्या यही थिकनेस मिल रही है हमको जो प्रा में यहाँ पे है? मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा कम है थिकनेस। कम है सर। हाँ कम है, और एंडिंग बराबर नहीं है, इसलिए डी नहीं है। डी नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। मैं जूम करता हूँ, फिर से थोड़ा सा सोचो। और सारा क्लू यहाँ पे है सा के पास, और ये प्रा के एंड में। अगर यहाँ पे कहीं देखोगे, यहाँ पे कहीं देखो, यहाँ देखो, और ये नीचे वाले देखो। तो माई माउस कर्सर इज ऑल्सो विजिबल टू यू नो। यस। हाँ तो ये देखो ध्यान से एक बार, फिर से एक बार ध्यान से देखो, तो उसमें समझ में आएगा। Okay, what you do, you take a screenshot. In the next class when you join, we will discuss. But I am giving you the hint, C और D तो नहीं बनता इसमें. It is not qualifying. So you can take the screenshot. सर फिर ए होगा क्योंकि उसमें स वाली चीज भी और प्र वाली स्मूथिंग भी है। हो सकता है, हो सकता है। और B क्यों नहीं होगा? B में नहीं है। B में देखो यहाँ देखने वाली चीज है, ये जो कॉर्नर है ना जहाँ पे ये एंड बन रहा है, ये चीज थोड़ा सा कर्व होके आना चाहिए। देखो प्रा में अगर देखो तो सारे आंसरों का जवाब हमारे प्रा और सा से निकल जा रहे हैं। ये कर्व तो होके सर आ तो रहा है तो पॉजिटिव स्पेस जो है प्र और स दोनों में, वो हम्म, व वो व में सिर्फ सी में दिखाई दे रही है, वो सी में काफी कर्वी है जो नहीं है प्र स में दोनों। नहीं यहाँ पे देखो, इस कॉर्नर पे देखो, ध्यान से देखोगे समझ में आएगा। राइट आंसर इज एक्चुअली ए। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आप लोग तो ये समझ में आएगा यहाँ पे। उसका आर यू फ्रॉम द हिंदी रीजन? डू यू अंडरस्टैंड हिंदी और इंग्लिश? सर बोथ आई एम कंफर्टेबल विद बोथ। Okay, okay, because in the somewhere in the middle I may drop by with the Hindi and English का combination रहेगा, so I think it is comfortable to most of you. यस। So now similarly a question will be given on the basis of calligraphy. Calligraphy तुम लोग जानते हो क्या होता है? सर स्टाइल ऑफ राइटिंग। Good, good. अच्छा. On the basis of that style, what do you think is the right option? Or we can leave it for now because थोड़ा आगे बढ़ के देख लेते हैं. Then probably we can do the better judgment. For now, you can take the screenshot of this, and we will then come back. Or I will leave this to you. Try to figure it out. लेकिन सारा जवाब यहाँ पे जी में हो सकता है इसका. थोड़ा जी में ध्यान से देखना. इसमें ये स्टाइल सेम फॉरवर्ड हो रही है. सर आई थिंक बी मस्ट बी द आंसर। इतना देखो मुस्कान. Always in UCEED and NID, there is one rule. Don't just jump to the conclusion and never try to find the right option. Always try to eliminate the wrong option. हमेशा नहीं तो ए ना और बी नहीं है शायद, इतना समझ आ रहा तो कौन सा नहीं हो सकता? है। ए एंड डी। ए एंड डी नहीं हो सकता क्योंकि ये थोड़ा तिरछा चल रहा है। ये देखो यहाँ पे आंसर तुम्हारा सी और बी में से ही होना चाहिए। ध्यान से देखोगे तो कुछ जवाब तुमको एन से भी मिलेंगे और जे से मिल सके, सॉरी आई से मिल सकते हैं। तो टेक द स्क्रीनशॉट, हम बात करेंगे इस पे आके, डोंट वरी। So we will be moving towards our topic, which is typography. So typography basically means applying the art and technique of arranging letters, actually letter होना चाहिए type, for the purpose of enhanced aesthetics and readability. देखो typography का जो significance आता है, that is basically जब हम ग्राफिक डिजाइन से भी पहले जाते हैं, पुराने हमारे स्क्रिप्चर्स में, अरबिक अरेबिक स्क्रिप्चर्स और हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स और एनी एंशियंट स्क्रिप्चर्स, सो दे वर हैंड रिटन मोस्टली, एंड दे वर पर्पस्ड कि भाई
ज्यादा से ज्यादा लोग इसे पढ़ पाए, इन्हें इस नॉलेज को हम सहेज के रख पाए, प्रिजर्व कर पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए. बट एट द सेम टाइम इट शुड बी engaging, it should be beautifully done. And from there till the date this art is evolving. सो टाइपोग्राफी क्या है बेसिकली? कितनी खूबसूरती की लिखाई हम जिसे बोल सकते हैं, जिसे पढ़ने में मजा है. और पढ़ते हम आ, तब है जब हम उस भाषा को या उस लैंग्वेज को समझ पाते हैं. लाइक राइट नाउ वी नो इंग्लिश, इसलिए हम पढ़ पा रहे हैं टाइपोग्राफी लिखा है. बट हमें इंग्लिश नहीं आती, फिर भी हम इसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट कर सकते थे. So that is basically how beautifully we play with the graphical element of letters and the lettering. ठीक है? And on the basis of typography, there are six elements which probably we have to cover and which are most crucial from the point of view of the examination. So without wasting time, we will go with the typeface. The typeface or font. These are the see देखो इसमें क्वेश्चंस आएंगे ना, दो तरीके से आ सकते हैं. फर्स्ट वन इज द अप्लाइड वन जो हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं. द सेकेंड वन टाइप कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ these jargons, or if not jargons, this terminology जो टाइपोग्राफी के अराउंड टर्मिनोलॉजी है, उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं. ऑलराइट. सो फर्स्ट थिंग विच इज टाइप फेस. नाउ देखो मैंने बहुत लोगों को ऐसे समझाया, देखा है कि टाइप फेस में और लोग फॉन्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं. टाइपफेस क्या है ना, बिगर फैमिली है एक तरीके से. आर द मोड टाइपफेस एंड फॉन्ट्स, दे आर मोड एंड मैनर टू ऑफ राइटिंग इट अप. टाइपफेस कैन बी डिफाइंड एज द ओवरऑल लुक एंड फील, है ना. यानी कि जैसे मारुति है, मारुति का अपना एक ब्रांड लैंग्वेज है, उसे देख के हम समझ सकते हैं कि मारुति की गाड़ी ऐसी दिखती है. वो टोयोटा की गाड़ी नहीं दिखती या होंडा की गाड़ी नहीं दिखती, क्योंकि उसका एक फॉर्म है एक तरीके का, यानी कि विजुअल्स है. या हुंडे को देख के आप पहचान सकते हो. बट मारुति एक ब्रांड है, उसके अंडर में कई तरीके की गाड़ी आती है. जैसे एक वैगन आर आती है, एक ऑल्टो आती है, एक इको आती है विद डिफरेंट पर्पस. सो टाइपफेस भी उसी तरीके से समझ लो कि मारुति एज अ जीनस, यानी कि बिगर फैमिली है, जिसके अंदर में हम खूबसूरती से उन लेटर्स को लिखते हैं. बट फॉन्ट उसका एक ऑफरिंग है. राइट. सो इफ यू गो थ्रू, एंड हम लोग एक वीडियो से समझने की कोशिश करते हैं इसको. चलो एक वीडियो में तुम लोग के साथ शेयर करता हूँ. माई स्क्रीन इज विजिबल? नो, विजिबल है ना स्क्रीन? Yes, sir. डू ऑल्सो लेट मी नो कि साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है. राइट. Between a font and a typeface? Well, Yes, sir. Yes, sir, audible. wonder no more, because that's exactly what we're clarifying today. I'm Nona Blackman for Envato Tuts Plus, and if you're trying to figure out what the difference is between a font and a typeface, you're not alone. Many people talk about typeface and fonts like they're the same thing, even though contemporary usage often blurs the line between the two. They're not the same. The word typeface came into being in the early days of printing to describe characters that share common design features. So, Helvetica is a typeface with characters that share Sir, common we are design. not able to see the video. New Roman is another typeface with characters that share common design features. Now, each of these in the early days of many people talk about typeface and fonts like they're the same thing, even though contemporary usage often blurs the line between the two. They're not the same. The word typeface came into being in the early days of printing to describe characters that share common design features. So, Helvetica is a typeface with characters that share common design features. Likewise, Times New Roman is another typeface with characters that share common design features. Now, each of these typefaces includes a collection of fonts. So, using the Helvetica typeface as an example,
The Helvetica typeface is made up of 51 fonts. Each of these fonts has a specific weight, style, size, and effect. Helvetica Light is one font, Helvetica Regular another, and Helvetica Bold yet another. And these are just 3 of the 51 fonts that fall under the Helvetica typeface. Think of it this way. The Helvetica typeface is the family, and each font is an individual member of that family. So how did these terms get so muddled to begin with? Well, the confusion arose with the evolution of desktop publishing, the naming conventions in operating systems, and various applications, where users were presented with a font menu rather than a typeface menu. Given everything I've said, does the difference between font and typeface matter anymore? Well, that depends on who you ask. To those who understand the distinction in terms, typically people who have trained in graphics, typography, or type design, the distinction is sacred. But it is worth bearing in mind that language and terminologies gradually change and evolve over time, and those changes are often driven by common usage, not by experts. Maybe what's important here is to know the distinction yourself and to use it when you're communicating to be clear and precise. But if you're talking to someone who isn't an expert or who uses the terms interchangeably, don't attempt to beat them over the head with your superior knowledge. Just stick to the terminology they understand. And remember, the essence of communication is to be understood, not to overcomplicate things. Well, that's my 2 cents on the difference between font and typeface. Thank you so much for watching. If you like this video, come on, Guys, समझ में आया what is the difference between the typeface and the font? कुछ Yes, कुछ sir. थोड़ा बहुत. Okay, great, great, great. चलो, coming back to our document. मुस्कान, कुछ कुछ समझ में आया? Yes, sir. Okay. अगर फिर भी कोई डाउट है तो हम इसको एक और तरीके से समझते हैं. अच्छा, टाइपफेस और फॉन्ट में ना, ये तो डिफरेंस समझ में आया. एक चीज और है जो ध्यान देने वाली है. फॉन्ट क्या होता है? इमोशन या रिक्वायरमेंट के हिसाब से वी चेंज. सपोज एक हम चाइल्ड बच्चों के लिए मैगजीन प्रिंट कर रहे हैं, तो जो बच्चों की बुक में या बच्चों की उस बुक्स में, कॉमिक्स में जो फॉन्ट जाएगा, क्या वही फॉन्ट एक न्यूज़पेपर में जाएगा जो पैन इंडिया, सपोज अ वेरी रिनाउंड और बिग न्यूज़पेपर विच इज बीइंग सर्कुलेटेड पैन इंडिया, सो क्या दोनों के फॉन्ट सेम हो सकते हैं? No, होने sir, चाहिए. not. क्यों, इसमें प्रॉब्लम क्या है? सर, बच्चों के लिए जो होंगे वो प्लेफुल होंगे ज्यादा, उसके कलर्स क्या डिफरेंट होंगे, उनकी मतलब कर्वी होंगे हाँ, थोड़े ज्यादा. प्लेफुल फॉन्ट ज्यादा होंगे. बट जब यस रीडर या ऐसे इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे हैं विच इज बीइंग सर्कुलेटेड अमंग द वाइड डेमोग्राफी, तब आवर सिलेक्शन ऑफ फॉन्ट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरियाज लाइक लेजिबिलिटी एंड रीडेबिलिटी, तो जो हम आगे डिस्कस करेंगे. देन टाइप फेस के देखो मोटे मोटे 2 क्लासिफिकेशन है, सेरिफ एंड सैंस सेरिफ. इसे याद रखना, एनआईडी में 2016 और 17 में आई थिंक दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड डायरेक्टली. सेंस सेरिफ और सेरिफ में एक बार चीज जो ध्यान से देखने वाली है, वो इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, सेरिफ का जो एग्जांपल है वो है टाइम्स टाइम्स रोमन. तो टाइम्स रोमन इज अ फॉन्ट, फॉन्ट का नाम है. बट सिमिलरली सेंस सेरिफ इज कैलिब्री. तो इफ यू लुक एट द डिफरेंस हेयर, देखो टाइम्स रोमन में जो टी है उसकी एंडिंग इज अ डिफरेंट वे, थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ है, सो दैट इट इज मोर रीडेबल, इट इज मोर, सॉरी, इट इज मोर लेजिबल. जब बहुत सारा टेक्स्ट होता है, सपोज इन अ न्यूज़पेपर, वी ऑलवेज यूज सेरिफ. यू कैन ऑलवेज रिमेम्बर, जब ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो सेरिफ यूज करेंगे. एंड जब इंफॉर्मेशन डेडिकेटेड है, लिमिटेड है, बट ब्यूटीफुली चाहिए, तो हम लोग सेंस सेरिफ टाइपफेस का यूज करते हैं. एक proper comparison table is being displayed on your screen. You can have a look. So if you talk appearance wise, sans serif, which is more modern, while the serif one is more classical and decorative with strokes. Readability wise,
What do you think? Times Roman is more readable or Calibri is more readable? मुस्कान कौन सा पढ़ने में इजी लग रहा है? सर टाइम्स न्यू रोमन, क्योंकि आपने कहा कि जब बहुत सारा टेक्स्ट होता है तो हम करेक्ट, उसको यूज वेरी। करते हैं। लेकिन अभी देखो बहुत सारा टेक्स्ट नहीं है। जो हम जब वेबसाइट के लिए पब्लिश कर रहे हैं या हम कोई ब्रोशर बना रहे हैं, तब हम कैलिब्री यानी कि सेंस सेरिफ टाइपफेस स्टाइल का यूज कर सकते हैं। बट व्हेन इट इज मोर इंफॉर्मेशन, जैसे न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन्स हो गए, बेटर टू कीप आवर सेल्फ स्ट्रिक्ट विद द सेरिफ टाइपफेस। समझ में आया? एप्लीकेशन, इफ यू सी इमोशनल टोन, serif font conveys traditional and reliability. On the contrary, the sans serif जो स्टाइल होता है conveys modernity but simplicity. तो ऐसा नहीं है कि वो सिंपल नहीं है, उसका यूज दूसरा है, राइट? दोनों देखो, कार होते हैं, पैसेंजर कार्स होते हैं, देखो थार भी एक गाड़ी है और वेगन आर भी एक गाड़ी है, बट दोनों का पर्पस अलग है, बट दे बोथ कैरी द ह्यूमंस, और दे बोथ आर यूज फॉर मोबिलिटी पर्पसेस। बट इसी तरीके से ग्राफिकल एलिमेंट्स में विच इज वेरी क्रूशियल टू यूज द फॉन्ट्स अकॉर्डिंगली। मांगा कॉमिक सीरीज बनाओगे तो उसमें आप सेल्फ सेरिफ के साथ खेल सकते हो, बट जब आप न्यूज़पेपर में सर्कुलेट कर रहे हो या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल रिपोर्ट जा रही है, तो वी ट्राई टू स्टिक विद द सेरिफ फॉन्ट। ऑफिशियली अभी तक वेयर एवर आई हैव सीन, वी मोस्टली यूज सेरिफ, where the legibility is an crucial factor, right? Common usage क्या है? Sans serif means is used in website apps and logos, and this thing is used in newspapers formal documents, right? Second element which is important to know here is the hierarchy. So देखो, न्यूज़पेपर में या शादी के कार्ड में भी कई चीजें होती हैं, लाइक शादी का कार्ड सबने देखा होगा। तो व्हाट हैपेंस कि उसमें इंफॉर्मेशन की हायरार्की दी होती है, इन द सेंस ये प्रोग्राम है, इन लोगों को ने बुलाया है, और ये इवेंट का वेन्यू है और डेट है। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो अक्सर हाईलाइटेड रहती है, enclosed by a proper negative space. But other in necessary information, I would say not unnecessary but lesser necessary information, is put on the lower side or in a very smaller text. Similarly, when we give a newspaper advertisement, देखो न्यूज़पेपर में जब एडवर्टीजमेंट देते हैं तो स्पेस का उसमें कॉलम बाय रो के हिसाब से दे चार्ज यू सर्टेन अमाउंट विच इज क्वाइट अ बिग। But when you are putting an advertisement in the newspaper, you want people to read first the tagline, तुम्हारी कंपनी की टैगलाइन, तुम्हारे ब्रांड की टैगलाइन, and secondary what your brand do, and then other information related to your ब्रांड, सपोज डिविडेंड आ रहा है या कुछ और न्यूज आया है। बट फर्स्ट व्हाट यू वांट इज द टू कैप्चर द अटेंशन, लोगों का ध्यान खींचना है। एंड दिस इज वेयर हायरार्की एज अ टूल, हायरार्की एज एन एलिमेंट ऑफ ग्राफिकल डिजाइन कम्स हैंडी। So we will again try to understand this through an example. I am going to share with you a video again. Sir, can you please zoom the video? Designs that will wow clients and also please. क्या कह रहे हो आप? Sir, can you please zoom the video? Zoom the video. Right. Give me a minute. How you can implement them into your very own graphic designs. Now, if you've seen me talk about hierarchy before on my channel, you probably still have not seen such a comprehensive video as today's upload. So having no visual hierarchy in your designs will usually result in two kinds of reactions with your viewers. First is confusion, which obviously is never a good thing. The viewer tries to take in all of the content at the very same level of importance, and thus they're left confused without actually digesting much of the information or any of the information at all. The second result is probably just as bad, and that is that the viewer sees everything at the same level of importance.
so they don't even try to guess at what you're trying to tell them through your visual communication as a graphic designer. And I kind of have a bonus third personal impression is that without hierarchy, your design simply would not look neat or professional. So one of the first and the easiest ways to create visual hierarchy on your graphic designs is to utilize the size or scale. This one is simple enough. People read bigger things first. Making a bold or a striking impact with either a word, a phrase, a graphic, or an image is going to draw the viewer and generate hierarchy. You then need to complement this with small elements based around your design. Now, I personally like playing with size hierarchy when it comes to typography because it looks really, really awesome and it can actually really set off a design if you do it correctly. However, do make sure to have negative space utilized and don't aim to fill the entire page with artwork or type. Now, speaking of typography, another neat way to add hierarchy to your designs is to use light and bold fonts. This is another technique that I personally employ on a whole lot of my design work, but make sure that you use fonts that match and do work well together. Another surefire way to generate some striking hierarchy is to use the bright colors that stand out from muted colors or grayscale designs. While lighter tints appear more distant and thus fall lower in the hierarchy than the richer ones, it's all about drawing attention and creating a focal point, a place of interest for the viewer to start their journey on your design, and then they can continue their experience around your artwork. And personally, I like yellows and oranges mixed with grayscales or blacks. These work really, really well together. But of course, there are so many ways to utilize this kind of hierarchy on your graphic designs. Guys, I am holding this video and we will go with the content. You can, always note down the video, what I have shared, and you can look by your own sometime also, because we have a limited time and we have to go through other 4 elements which are equally crucial. All right. Yes, sir. Oh, great. Okay. Then after hierarchy, then comes the alignment. So if I remember correct, sometime back, options were like this were given in the examination, and they asked what is the meaning of a particular option. So suppose if I talk about the last one, can you see the last arrow? Last Yes, means sir. on your right. What is the meaning of that text or that that symbol? Do you remember? So that the text will be in between. In between, and what about the second last? All text will be in right side only. Right aligned, it was say. So alignment is another critical element which is very much crucial when we are designing uh, our visiting cards or some sort of posters. So alignment is another important criteria. And guys, ये छोटे छोटे जो symbols होते हैं ना daily life में, try to remember them. See, in data examinations, observation is a very crucial part, and observation of those things which are around us. हम रोजमर्रा की जिंदगी में जिन चीजों को यूज करते हैं, हमें एटलीस्ट उनका पता होना चाहिए। वो ये मान के चलते हैं कि आपने क्लास 12th में पावर पॉइंट यूज किया होगा, आपने वर्ड यूज किया, बेसिक सॉफ्टवेयर से हम यूज करते हैं। सो एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर, से आंखें खोल के रखो, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे और कहाँ से आएंगे वो बहुत ही अप्लाइड वे में होंगे। एंड तुम दोनों ने बताया, लेकिन थोड़ा थोड़ा करेक्ट था और थोड़ा थोड़ा रॉन्ग भी था। सो इफ यू सी, दिस सिंबल मींस जस्टिफाइड। जस्टिफाई मींस स्पेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है टेक्स्ट को। सिमिलरली, गो लुक एट इट, इट इज लेफ्ट अलाइंड, सेंटर अलाइंड, राइट एंड जस्टिफाइड। तो दिस आर कॉल्ड अलाइनमेंट बटन्स। डायरेक्ट पूछ लेगा, ऐसे ही पूछेगा, है ना, उस टाइम पे यू हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट कि कैसे होता है, बिकॉज दिस सॉफ्टवेयर आर यूज्ड इन डेली लाइफ।
So alignment in itself is a very crucial element, and we will try to understand with this layout and composition in which text are aligned in a very three different unit techniques. First one is vertical, where it is more aesthetically pleasing. Acha, second alignment, if it is about art and technique, suppose if they have written in the second wala, बट कैसा फील आ रहा है मेरे को ये समझना है तुम लोगों से कि अगर ऐसा ऐसा टेक्स्ट लिखेंगे तो वो किस तरीके की कंटेंट में जाएगा। क्या वो एक स्पोर्ट्स मैगजीन में जाएगा, क्या वो एक फैशन मैगजीन में जाएगा, क्या उस टेक्नोलॉजी मैगजीन में जाएगा, और ऐसा क्यों लगता है। और एक चीज और देखो कि क्या कहाँ पे सेरिफ यूज हुआ है और कहाँ पे सेंस सेरिफ यूज हुआ है। मैंने तुमसे बोला था कि जब ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है तो हम सेरिफ का यूज करते हैं, बट देखो जब जब बात आती है, नॉट ऑलवेज अबाउट द इंफॉर्मेशन, बट कभी कभी हम स्टाइल गाइड या कह लो हम अपना स्टाइल को जब डिफाइन कर रहे होते हैं तो हम कुछ रूल्स को ब्रेक भी करते हैं। इट्स नॉट लाइक दे आर रिटन रूल्स ऑफ यूनिवर्स, ये रूल्स हम ही ने बनाए हैं। मोस्टली इट वर्क्स, बट समटाइम यू पीपल यूज देम इन अ डिफरेंट वे फॉर मोर एस्थेटिक रीजंस, राइट। सो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर बीच वाला पोस्टर वेयर आर्ट एंड टेक्निक इज रिटन, किस जगह पे यूज करना चाहोगे इस अलाइनमेंट को, इस लेआउट को कहाँ पे यूज कर सकते हैं, किस तरीके के ऑफरिंग्स में, एनी आइडिया। सर वी कैन नॉट यूज इट इन अ मतलब सीरियस कोई भी टॉपिक होगा, मतलब कोई सीरियस पर्पसेस के लिए कुछ राइट अप लिखा हुआ है उसके लिए वहां तो पे नहीं कर सकते, उसके लिए यूज नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा फ्लैशी होगा, एनर्जेटिक होगा, ऐसा जहां पे तुम्हें पहले आंखों को, आईबॉल्स को तुम्हें मूव कराना है। तो इट कैन बी अ स्पोर्ट्स मैगजीन, इट कैन बी समथिंग मोर अबाउट टेक्नोलॉजी, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक टाइप का। Sir, सिमिलरली ऑन द, why? देखो कुछ चीजों ना, ऐसा नहीं है कि किसका कोई रूल है मुस्कान, या होगा भी तो हो सकता है शायद मुझे ना पता हो, लेकिन मोस्टली अभी तक जितना मेरा नॉलेज है इसमें कोई रूल नहीं है। हम अपनी टेक्निक्स और स्टाइल को एज पर द नीड इवॉल्व करते रहते हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको ऐसे लिखने से ये फील आता है। कई बार हम फील को ना जोड़ते हैं, जैसे सपोज एनर्जी हो या एक्स लिखना हो हमको, तो वी इंक्लाइन देम, वी मॉडिफाई द टेक्स्ट इन सच अ वे दैट वो उस आइडिया को, उस इमोशन को कन्वे करे। बट अगेन दैट इज नॉट अ रूल, दैट इज फुल्ली एन एक्सपेरिमेंट। क्या अच्छा लग रहा है उसके बेसिस पे हम सिलेक्ट करते हैं। बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई विल शेयर अ लिंक विद यू गाइस, मतलब मैं एक वीडियो और शेयर करता हूँ क्विकली, बिकॉज 3-4 एलिमेंट्स स्टार्टिंग वाले आर वेरी वेरी क्रूशियल। एक सेकेंड ना, लेआउट एंड कंपोजिशन, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम शेयरिंग विद यू। Layout and composition. In a way, they're the foundation of design. They give your work structure and make it easier to navigate, from the margins on the sides to the content in between. Of course, it's not just about working with text. Composition matters in other mediums too, like graphic design, web design, and much more. Without a well-composed layout, your work would basically fall apart. The key to mastering layout and composition is to think like a designer. Luckily, it's easier than it sounds. There are 5 basic principles that can help you transform your work and sharpen your eye for design. Let's start at the top and work our way down. Proximity is all about using visual space to show relationships in your content. In practice, it's pretty simple. All you have to do is make sure related items are grouped together. For example, blocks of text or elements in a graphic. Groups that are not related to each other should be separated to visually emphasize their lack of a relationship. All in all, this makes your work easier to understand at a glance, whether it's purely text or something more visual.
White space is an important part of every composition. Now, this doesn't mean literal white space. It just means negative space, like the spaces between your content, between lines, and even the outer margins. There's no one way to use white space correctly, but it's good to understand its purpose. White space helps you define and separate different sections. It gives your content room to breathe. If your work ever starts to feel cluttered or uncomfortable, a little white space might be just what the doctor ordered. Alignment is something you deal with all the time, even if you don't realize it. Whenever you type an email or create a document, the text is aligned automatically. When aligning objects by yourself, for instance, images or separate text boxes, getting it right can be tricky. The most important thing is to be consistent. Let's take a look at what that means. It might help to imagine your content arranged inside of a grid. Notice how there's an invisible line centering each image to the text? Each grouping is also evenly spaced and aligned, with equal-sized margins. It's that attention to detail that makes the composition easier to navigate. Without consistent alignment, your work could start to feel disorganized. Contrast simply means that one item is different from another. In layout and composition, contrast can help you do many things. For example, catch the reader's eye, create emphasis, or call attention to something important. There are lots of strategies for creating contrast. You can use color, adjust the size, shape, or visual weight of an object, or use contrasting styles of text. Contrast is also closely tied to hierarchy, a visual technique that can help the viewer navigate your work. In other words, it shows them where to begin and where to go next using different levels of emphasis. Establishing hierarchy is simple. Just decide which elements you want the reader to notice first, then make them stand out. High-level or important items are usually larger, bolder, or more eye-catching in some way. Repetition is a reminder that every project should have a consistent look and feel. That means finding ways to reinforce your design by repeating or echoing certain elements. For instance, if you have a specific color palette, look for ways to carry it through. Guys, once again, I would say just take this video because in YouTube also or other educational content, there are the multiple variety of resources available. But when it comes to providing you, I look after 5-10 videos, and I think whichever the most suits, I offer it in the classroom. Definitely credits to the Learn Free, which is the content creator of this video. But we are using for just educational purposes to just understand the things, right? Coming back to our topic. So is it clear na alignment and how this contrast and other things are relevant when we are aligning our text, when we are thinking of, graphical design part of an information. कुछ कुछ समझ में आ रहा है वीडियो से और जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मुस्कान? यस सर, बट लाइक जैसे आपने ऊपर वाले उसमें कहा था कि जो सेकंड ऑफ ये आर्ट एंड टेक्निक वाला है, हाँ हाँ। ये लाइक स्पोर्ट्स मैगजीन में यूज होते हैं, तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? देखो, आइडेंटिफाई नहीं होता है, ये इमोशनल वो होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे, देखो ये मत भूलो कि हम डेट एग्जामिनेशन में हैं यहाँ पे। तो वो ऑप्शन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता भी है, तो वो आपको ऑप्शन ऐसे देगा कि यू कैन इजिली रूल इट आउट अनलेस यू ट्राई टू फाइंड द राइट ऑप्शन। हमेशा रॉन्ग वन को हटाने की कोशिश करो। और ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आज तक आया है अभी तक। फ्यूचर में आता है, आई कैन नॉट से, बट क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड समथिंग लाइक दिस, विच हैव अ कॉन्क्रीट आंसर, लाइक जैसे अलाइनमेंट के अराउंड, और समथिंग वी हैव डिस्कस्ड like this, which is more observation based in this thing. But you should be aware of certain elements so that when you are providing a solution or when you are thinking of providing a solution for a given situation in your TET examination, तुम लोग उसको बेहतर तरीके से कर पाओ। मैं
आगे देखो धीरे धीरे जैसे समझोगे समझ में आने लगेंगी चीजें, कुछ पैटर्न्स होते हैं। एक सेकेंड। सो फॉर नाउ अलाउ मी टू गो अहेड। हम बाद में इसके बाद डाउट्स को क्लियरिफाई कर लेंगे, ठीक है। सो Yes. अनदर important एस्पेक्ट ऑफ विजुअल डिजाइन और ग्राफिक डिजाइन इज द स्पेसिंग। देखो स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और स्पेसिंग तीन तरीके की होती है। पहला होता है कर्निंग, यानी कि एक वर्ड में दो लेटर्स के बीच में क्या स्पेस है। एंड रिमेंबर दीज टर्म्स, ठीक है ना। इनको बहुत मतलब समझदारी से याद रखना, so that if it asks or if it gives in front of you, you should be at least aware of the basic terminology like kerning, tracking and leading. So अगर हम kerning करें, the distance between that exists between the two individual characters in a word is called kerning, है ना। का से याद रखो करेक्टर, का से याद रखो kerning, दो कैरेक्टर्स के बीच में जो स्पेसिंग होती है उसे kerning बोलते हैं। सिमिलरली लीडिंग एज एविडेंट, लीडिंग लीडिंग देखो बहुत आसानी से दिख पा रहा है। लीडिंग इज द ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, यानी कि दो लाइंस के बीच में जो डिफरेंस होता है, विच इज द स्पेस बिटवीन द लाइज बिटवीन द टू लाइंस ऑफ अ टेक्स्ट बॉडी इज कॉल्ड लीडिंग। लाइंस और लीडिंग याद रखो, का से कर्निंग, का से कैरेक्टर्स के बीच में। जो बचता है तीसरा, दैट इज कॉल्ड ट्रैकिंग, विच इज द स्पेसिंग ऑफ एवरी लेटर इन अ सिंगल वर्ड और इन एंटायर पैसेज। तो वो वर्ड्स के बीच में जो गैप होता है ना, अभी तक करेक्टर्स के बीच में हो रहा है, वर्ड्स के बीच में जो होता है, इसे हम लोग ट्रैकिंग बोलते हैं। वर्ड्स के बीच में मतलब एक ही लाइन के भी, एक ही लाइन की हम बात कर रहे हैं। दो वर्ड्स है, जैसे स्पेस के आगे कुछ लिखा होता है तो इनके बीच में जो गैप होता है। तो इसको भी समझने के लिए एक बार फिर से हम लोग यूट्यूब पे ऐसा एजुकेशनल मटेरियल चलते हैं, एक बार जल्दी से समझ लेंगे, सो दैट यू गाइस हैव द क्लियर आइडिया। एक मिनट बस, बट से हम लोग यूट्यूब एक बार देख लेते हैं। डू लेट मी नो कि स्क्रीन आर विजिबल, स्क्रीन इज विजिबल, साउंड इज ओके। Designers adjust the space between letters to change Yes, the sir. visual density. Type spacing. Designers adjust the space between letters to change the visual density of a line or block of text. Leading. Leading is the space between lines of text, the vertical space from baseline to baseline. Tracking. Tracking is the space between letters in a word or line of text. Kerning. Kerning is the space between individual letters. Follow Cry Studio to learn more about graphic design. So guys, you can take this Cry Studio learning graphics, they have excellent understanding। यहाँ पे कुछ चीजों को देखो, जब तक करोगे नहीं ना, या Adobe Illustrator को जैसे आप यूज करते हो, then you will come to know what does a word mean, how it is being applied। जब तक करोगे नहीं वो समझ में नहीं आएगा। But for now, you can take the terminology from here and you can look for the other resources which are more helpful. Because this class is a limitation, I have to cover two, three more elements. Allow me to go to later. We can discuss your queries, but for now, allow me to go ahead. Then the fifth element, what comes in the graphic design is the contrast. देखो contrast बहुत ही easy है, और हम लोग अपनी जनरल लाइफ में भी करते ही है। सपोज इफ यू राइट ऑन अ व्हाइट पेपर विद अ ब्लैक पेन, इट्स अ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट होता है जब ये चीजें हमको विजिबल होती है। लाइक इफ यू लुक एट दिस image which I have provided here, don't do this on, if you compare on the left and the right, which one in the red color is more clearly visible? Right wala do this or don't do this? तो यू सी द बैकग्राउंड में आपने लाल रंग लिया, रेड कलर लिया, और आपने फ्रंट में यानी अपने लेटर्स के लिए ब्लू कलर लिया। तो बेसिकली इसमें आंखों का धोखा, या फिर कह सकते हैं थोड़ा विजुअल चैलेंजेस भी आते हैं। ब्लू कलर रेड पे हमको पर्पल जैसा दिख सकता है। सो विच इज नॉट द पर्पस ऑफ अ गुड ग्राफिक डिजाइनर, कि भाई आप जो कलर यूज कर रहे हो, जो आप कन्वे करना चाहते हो, तो मैसेज शुड बी वेरी क्लियर। तो चूज योर लेटर्स, चूज योर कलर्स वेरी precisely, I would say,
सपोज व्हाइट पे आपने ब्लैक से लिखा या ब्लैक पे आपने व्हाइट से लिखा, इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट, आई वुड से एवरीडे एग्जांपल ऑफ। बट कॉन्ट्रेरली इफ यू सी, यो येलो बैकग्राउंड पे मैंने व्हाइट से लिखा, इज इट, आर यू एबल टू रीड इट? क्या अगर मैं ऐसा एक न्यूज़पेपर या ऐसा मैगजीन एक आपको देता हूँ, तो पूरा येलो पेज है और व्हाइट पे लिखा हुआ है, विल यू बी एबल टू रीड इट? तो मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल है, बिकॉज दैट इज वेयर वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दिस एलिमेंट विच इज कॉन्ट्रास्ट। तो ऑलवेज सर यूज द। इट कैन बिकम वन डे एस्थेटिकली गुड और नॉट, कि जैसे अभी बहुत सी चीजें, मतलब ये ट्रेंड हो सकता है, आपको क्या लगता है कि कभी ये चीज की जो इम्परफेक्ट है वही ट्रेंड बन जाए? देखो अंकित, डिपेंड करता है कि फंडामेंटल्स तुमको देखने हैं या तुमको सिर्फ एक वो करना है, शोषा करना, मतलब आई मीन टू से एक पेज की बात है, दो पेज की बात है, मुझे मुझे सपोज एक ब्रांड एक्स वाई जी है जिसको मुझे हाईलाइट करना है, ठीक है, वहां पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। कई बार क्या होता है, हम ऐसी टेक्निक्स का यूज करते हैं लोगों के ध्यान को अट्रैक्ट करने के लिए, कई बार हम ऐसी टेक्निक्स का यूज करते हैं। बट when it comes to continuous things like newspaper, जहाँ पे ज्यादा इंफॉर्मेशन है, सच एंड विच इज कॉन्टिन्यूअस इन द सेंस डेली आ ही रहा है और सर्टेन वे में आ रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में आ रहा है, वैसे टाइम पे हम ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करते। बट अगर सपोज मैंने अपना एक ब्रांड बनाया और मेरा काम ये है कि बस 3 सेकंड के लिए लोग रुके, आजकल इफ यू सी इंस्टा पे जो सारी चीजें लोग कर रहे हैं, क्या वो सही होती है? कई बार वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं या कुछ ऐसे काम करते हैं विच आर नॉट ओके टू अदर्स, बट वो क्या कर चाहते हैं कि अटेंशन चाहते हैं। तो अगर वैसा तुम्हारा ब्रांड का पर्पस है कि मुझे अटेंशन चाहिए इमीडिएट, देन मैं अपने मैसेज को लेके आऊंगा, देन यू कैन डू दिस टाइप ऑफ ट्रिक। But when it comes to practical application for a longer or larger text body, it is never, ever, ever advised to compromise with the fundamentals. Fundamentals गलत नहीं कर सकते. That is the moral obligation. That is you say need of us as a designer to not do the mistakes. Sometimes it is embedded into somebody's mind. Sometimes we learn through our mistakes. सो आई वुड से अगर एक स्टंट करना है, एक पब्लिसिटी करना है तो चलेगा, बट लॉन्ग टर्म में ये काम नहीं करेगा। यू कैन, दैट इज वेरी एविडेंट फॉर यू। ऑल राइट, ओके। देन द सिक्स्थ एलिमेंट इज कलर्स। सी कलर इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट बिकॉज इट हैज सर्टेन इमोशन अटैच टू इट। पूरा मूड बदल जाता है, थीम बदल जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं एक एक्स वाई जेड फ्यूचरिस्टिक ब्रांड हूं जो मोबिलिटी यानी कार या ऐसे फ्यूचरिस्टिक चीजें बना रहा है, ठीक है। और क्या मैं उस वेबसाइट को पिंक कलर से बना सकता हूँ? क्या मैं पिंक कलर को एज अ बेस रख सकता हूँ अपने बनाने के लिए? सो व्हाट आई ऑफर इज फ्यूचरिस्टिक कार्स। क्या पिंक कलर सही रहेगा या कुछ ऐसा कलर वो जो बहुत ही फ्लैशी सा हो, नियॉन कलर? नियॉन कलर्स हो सकते हैं, कई बार अभी लोग यूज करते हैं, बट पिंक कलर क्या सही लगेगा? या एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसपे आधार या कुछ क्रूशियल इंफॉर्मेशन दे रखी है और उसको मैंने फ्लोरसेंट ऑरेंज कलर से कर दिया, विल दैट बी ओके? एंड इफ नॉट देन व्हाई, एंड इफ यस देन व्हाई? मुस्कान, कुछ बोलना चाहोगे इस पे? सर मैं आंसर ही सोचना चाह रही हूँ, लाइक मैं ये तो समझ रही हूँ कि नहीं, बट मैं रीजन नहीं जान पा रही हूँ। हाँ, मतलब एटलीस्ट तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है ना क्यों नहीं होगा। मान लो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, कोई भी एक वेबसाइट है, सपोज ट्रैफिक की वेबसाइट है, सी उसको हर तबके का और हर समझ का लिटरेट जो है, मतलब बहुत ज्यादा जो पढ़े लिखे हैं, एक बेसिक है जो कंप्यूटर जिनको बेसिक पता है, हर बंदा से कर रहा है। हो सकता है कि वही वेबसाइट यूज कर रहे हो वो अपने ऑफिस में। तो जहाँ पे ज्यादा लोगों का इंटरेक्शन होने वाला है वहां पे हमको चीजों को बहुत सोच समझ के रखना है। ऑल्सो हमें ये देखना है कि हम कैसे इमोशन को हम कन्वे करना चाह रहे हैं, किसको कन्वे करना चाह रहे हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर नॉट लाइक मजाक की उन्हें अटेंशन चाहिए किसी का। दे आर फॉर द पीपल बाय द पीपल, दे आर सर्विंग अ बिगर पर्पस। सो वहां पे जो कलर्स होंगे,
स्कीम्स होंगे, फॉन्ट्स होंगे, दे वुड बी वेरी केयरफुली चूजन, क्योंकि वो लोगों को सर्व कर रहे हैं। सर्व इन द सेंस सर्विसेज है, बहुत बड़ी डेमोग्राफी को वो केटर कर रहे हैं, हर भाषा की डेमोग्राफी को केटर कर रहे हैं, हर रेस के लोगों को कर रहे हैं, तो दैट विल बी मोर न्यूट्रल एंड मोर इन द फेवर ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी, राइट। तो आप चीजों को आज के बाद, इस क्लास के बाद ध्यान से देखो, क्या एथर एक कंपनी कैसे अपने को ब्रांड कर रही है, उसके अपोजिट टेस्ला एक कंपनी अपने को कैसे ब्रांड कर रही है ऑन द डिजिटल स्पेसेस, वहीं पे गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो कैसे दे रही है, फॉन्ट कैसे है, रेलवे की वेबसाइट का कलर क्या है, ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन का पार्ट होती हैं, एंड विच इज वेरी वेरी क्रूशियल व्हेन यू बीइंग अ डिजाइनर are accountable for large people, for their choices, for their everyday interactions. It is very crucial that being designer, you take the decisions very, I would say, precisely, or in a very settled state of mind. So no, very subtle. इट्स नॉट लाइक आपने बच्चों का जैसा एक वेबसाइट बना दिया और उस वेबसाइट का पर्पस है कि वो न्यूज के बारे में है, या वो इंडियन रेलवे की वेबसाइट पिंक कलर में नहीं हो सकती डेफिनेटली। लोग शायद कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन लार्जर ऑडियंस नहीं कर पाएगी, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी इंफॉर्मेशन को। So that is where the understanding and application of colors as an element come forward, come handy, and which is a crucial understanding, right? So again, we will move to one more to understand this thing. We will go to a video. Just give me a minute. I'm sharing with you the screen. Confident designer. In this lesson, understanding basic color theory will help you grow into a confident designer. In this lesson, we show you how to find and use color combinations to make your design effective and colorful. The most basic colors are red, yellow, and blue. We call these primary colors, and when we mix them together, we can start to make any color we like. By mixing two primary colors, we create secondary colors. Let's see what happens when we combine red and blue. We make purple. When we mix secondary colors with primary colors, we discover a third range, tertiary colors. But that's not all there is to it. We can change the brightness or darkness of these colors too. When we add black to colors, we're changing its shade. When we add white, we create a tint of that color. As well as light and dark, colors can appear warm or cool. It's easy to remember which colors are warm. Just think of a fire or a sunset. Reds, yellows, and oranges are all warm colors. To put out a fire, you'd use water. So the opposite is where we notice cool colors. Think blues and greens. But how do we combine these colors to apply color to our designs? The color wheel is a useful tool. With just one look, we can see every color imaginable. The wheel also helps us to find color combinations, like these. With complementary colors, opposites attract. These are two colors that live on opposite sides of the wheel. Some examples of complementary color combinations are green and red, yellow and purple, orange and blue. Because complementary colors are opposites, they have high contrasts, so we use these pairings to stand out. When we talk about how bright or dark a color is, we're talking about its tone. In monochromatic color combinations, we have variations of the same color, like these. We get tones, tints, or shades by adding black or white to colors. Monochromatic colors have low contrast.
So we use these to give designs a different feeling. What feeling does this design show? Analogous, or sometimes called sympathetic colours, are colours that sit closely together on the colour wheel. Think of these colours as sets that hug one another. These colours match well with some contrast. They make design elements feel related to each other, like this example. These are just colour wheel combinations. When we make our final selection, this becomes our colour palette. Much like a painter's wooden palette, our digital colour palette is the specific selection of colours we use in our design. Colour palettes should be applied to designs strategically. For example, our palette might include cream, red, yellow, and cornflower. As we work these colours into our design, we might allocate one to our background, another to our text, and another to our objects. Here, you can see the So, guys, once again, we will be using this all these videos just for the educational purposes, and you can take the note of this video, and whenever you are free, you can drop by to the YouTube and look at this video, which is around the color theory. So, coming back to our topic, our presentation. Acha, whatever I am sharing with you right now, it is always available to you free of cost, and absolutely free to anyone to download your free study materials. So either you can scan this QR code, or you can use the link provided you in the chat box to access our free study material. So do share with your friends and anyone who is aspiring to be a designer or applying for examinations this year, right? So you can scan this QR code, and the link, similar link is provided over the chat box, right? So we will conclude with one more question, which is again a question which has been asked in the UCEED either in 2018, 19 or 20. I don't remember the year particularly, but what is the number of fonts? How will you solve this question when there is a number of fonts given and you have to provide how many different type of fonts are uh, provided here? You want to give a try on the basis? So Yes, sir. in such questions, always try to first identify, are there serif and the sans serif? If there are serif, who all are similar? अगर sans serif में है तो कौन से similar हैं? So would you like to give a try? And my suggestion is my personal suggestion, not a recommendation. If you are confused and if you it has a question, don't forget you are there to score in the data examination. You are not there to be the master of all the topics. So if any point you feel ki there's a negative marking, or you are not able to identify the right option, n- try to skip this question for a while. Later you can come back and you can anytime attempt it. So why I have put this question here is first to give you the time, at least you try probably in the last, or you can take the screenshot, you can try and let me know in the next class. But if you think you are not confident, always advised, try to skip for a while. Later, if you get time, you can definitely come back and answer the question. बट ये भी सीख लो कि कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और किसको छोड़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है. सो इधर आई विल नॉट वेट, थोड़ा सा आगे चलते हैं टू अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज लेजिबिलिटी एंड रीडेबिलिटी, जिसमें देखो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. सो if I have to make you understand, let us understand with one example. सो लेजिबिलिटी मीन्स होता है कि कितना आसानी से आप दूर से, मैं यहाँ पढ़ता हूँ. लेजिबिलिटी इज द एबिलिटी टू डिस्टर्न पर्टिकुलर लेटर और कैरेक्टर फ्रॉम वन अनदर इजली. एक दूसरे से आप कैसे उनके बीच में अंतर कर पाते हो. इन डिपेंड्स ऑन द थिंग्स लाइक फॉन्ट आपने कैसा लिया, फॉन्ट का साइज क्या लिया है, ठीक है ना, अलग अलग आपने हायरार्कीज का यूज किया है. तो वो हम बात करते हैं लेजिबिलिटी की. रीडेबिलिटी मतलब कितनी आसानी से कोई बंदा किसी भी पैराग्राफ को पढ़ पा रहा है. ठीक है. तो
इसके अराउंड आप इस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये एक बार आप लोग देख लेना, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखो रीडेबिलिटी में बेसिकली हम क्या करते हैं, फॉन्ट के साथ प्ले करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स के साथ नहीं, एक ही फॉन्ट के हम साइज को वेरी कर सकते हैं। लेजिबिलिटी में भी हम मोर और लेस फॉन्ट के साथ ही प्ले कर रहे हैं, बट निगेटिव और पॉजिटिव स्पेस का भी यहाँ पे ध्यान रखते हैं। यहाँ पे साइज के वेरिएशंस ज्यादा होते हैं, यहाँ पे हम स्पेस के साथ ज्यादा प्ले करते हैं। Typography for a good design is a medium to communicate your idea, communicate your understanding in a better way. So typography in itself is a very crucial topic, and इसकी कुछ एप्लीकेशन हैं, जैसे हम वेब डिजाइन में इसका यूज करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन में यूज करते हैं, then we use for the newsprint or the print media, then branding and identity, then we use it for the user interface design, mobile application, to generate certain art forms, different ways. Let us come to our last thing, which is our last question. इसमें बहुत सारे नंबर्स एक फॉन्ट के दे रखे हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई, दिस इज अगेन अ यूसीड क्वेश्चन, यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन डज नॉट बिलोंग टू दैट फैमिली। कोई एक नंबर का सेट है यहाँ पे, वो 7070 भी हो सकता है, वो 1847 भी हो सकता है, विच इज नॉट सिमिलर। So, do you want to give a try, or do you want to take the screenshot? Sir, please explain the question again. एक बार पढ़ो खुद से मुस्कान, because in your examination you have to crack it out by yourself, and then you can ask me what is the problem. तो इसमें बहुत सारे नंबर्स का कॉम्बिनेशन तुमको दे रखा है। एक कॉम्बिनेशन है, जैसे 4338 एक कॉम्बिनेशन है, 3683 एक कॉम्बिनेशन है, जो सेम नहीं है। तो इट्स प्योरली एन ऑब्जर्वेशन बेस्ड एक्सरसाइज। अंकित, कोई हिंट, कोई ट्राई करना है? सर मोर ऑफ नंबर्स में जीरोस ज्यादा है, तो सबसे पहले जीरोस पे फोकस करेंगे कि वेरी अगर गुड, वहां से वेरी आंसर। गुड। और ट्राई टू फाइंड आउट ऐसे नंबर जो कॉमन है, जैसे 3 को ध्यान दो, 6 पे ध्यान दो, पकड़ में आएगा। और जीरो जो तुमने बोला ना, वो सबसे ज्यादा यूज हुआ है। सो अगर जीरोस पे भी ध्यान दोगे तो मिलेगा, देयर इज अ पैटर्न। तो ट्राई ट्राई करना है। मुस्कान, कुछ ऑप्शन लग रहा है इसमें? Sir, still observing. देखो, इट्स एब्सोल्युटली ओके, कई बार क्वेश्चन आएगा और तुमको कॉन्फिडेंट नहीं हो, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड फॉर अ वाइल उसको वहां छोड़ दो, मत करो, बजाय कि रॉन्ग अटेम्प्ट करके नेगेटिव मार्किंग लेके आओ। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में तुम्हारे 3 मार्क्स नहीं जाते, 3.5 मार्क्स जाते हैं, जिसकी वजह से रैंक गिर जाता है। क्योंकि 3 तो वो गए, और 0.5 या 0.7 जो तुम्हारा नेगेटिव मार्क्स आ गया। सो ऑलवेज ट्राई टू control your emotions when there's a dicey question in front of you. So all the way around, if you can give me a hint in 5 minutes, like next 10 seconds, then it's okay, or you can keep the screenshot and just be familiar कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अंकित, कोई ट्राई देना है? मिला? यस सर, यहाँ पे मुझे लगता है ये नॉर्मली भी ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, मतलब कौन सा नंबर ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट नंबर कवर करने के लिए सबसे एक एक नंबर लेंगे कि ये ज्यादातर यूज हुआ है। हाँ, टोटल हाँ। नंबर ऑफ काउंट करने पड़ेंगे, फिर जीरो, जैसे टोटल जैसे 25 नंबर है उसमें से 15 में जीरो है, तो हम्म। बाकी के 10 में कौन से हैं उसको अलग निकालना पड़ेगा। अल्टीमेटली हमें एक मिलेगा, बट तो टाइम क्या टेकिंग का करोगे है। इसको, इस सेंस में क्या करोगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे या छोड़ दोगे? टाइम मिलेगा तो लास्ट में करेंगे, वरना स्किप करेंगे सर। ओके, मुस्कान, व्हाट विल यू डू? कुछ ऑप्शन है तुम्हारे सामने? कुछ तुमको लग रहा है कि हो सकता है इसमें से? No, sir, not yet. चलो, नॉट अ प्रॉब्लम। ऐसे क्वेश्चन में जब भी कंफ्यूजन हो, देखो टाइपोग्राफी के क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट तुमको समझ में आ गया, चमक गया तो चमक गया, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था। अदरवाइज इफ यू फील कि नहीं, किसी वजह से नहीं हो पा रहा है, इट्स एडवाइजेबल टू कीप इट फॉर लेटर। हम हमको ये नहीं भूलना है कि हम यहाँ पे टेट एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आए हैं, हम यहाँ पे अभी उस सब्जेक्ट में पीएचडी करने नहीं आए, राइट?
And finally, if you have any query, if you have any doubt, if you think that you want certain topics to be covered, or if you want anything, you can write to us at liveclasses@entrance360.com, right? So that's all, guys, from me. Once again, just to revise, we have covered 6 fundamental elements of the typography, and out of which is typeface, hierarchy, alignment, space, contrast, and the concept of legibility and readability. All right. Now, time for one last question or any last query if you have. Otherwise, we will take a break. And please share this initiative um, with your friends, your colleagues, whosoever is preparing for examinations. तो कुछ पूछना है, कुछ और बात करना है, or we can call off this class. Muskan, Ankit. So on the scale of 10, how much in a 1 hour time को भी देखते हुए, did you get some 3-4 concepts? कुछ कुछ समझ में आया, मुस्कान, अंकित? Yes, sir. Yes, sir. Great. All right. All right. Okay, guys. So stay tuned. And our next class is on the coming Thursday. So we will see you with a new topic. All right. I will take a break from here. Bye bye. Take care.